स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी फ्री लर्निंग फ्रॉम केजी टू पीजी। तो आज आम स्टार्ट करवा क्लास +3 जोटा आमर बीए एंड बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स सिलेबस। ओके, तो आम स्टार्ट करवा मैथमेटिक्स ऑनर्स सिलेबस। तो फर्स्ट सेमिस्टर आम रोचे आमर 3 इयर्स कोर्स रोचे। तो 3 इयर्स भितर तुम मानक दबाक पड़ो 6टा सेमिस्टर। ओके, तो फर्स्ट सेमिस्टर आमर कोर्स रोचे पिला माने मैथ्स जोटा कि फर्स्ट रोचे आमर कैलकुलस। ओके, देन मैथ 2 रे रोचे आमर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। यहीटा देख पिला माने ये जो दीटा तुम टॉप चैप्टर रोचे ये गोटे बुक तुम पढ़ कैलकुलस बुक एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स गोटे रोचे। नेक्स्ट बुक तुम प्रिपेरेसन कर जो दीटार एग्जाम तुम कौटी कंडक्ट कर फर्स्ट सेमिस्टर ही कंडक्ट कर। ओके, तो फर्स्ट सेमिस्टर तुम जो कंप्लीट हो दीटा बुक दीटा बुक कंप्लीट कलापर तुम सेकेंड सेमिस्टर को आसो। तो सेकेंड सेमिस्टर आमर आउ दीटा टॉपिक जहाँ रो दीटा बुक तुमको रेफर करिए पड़ो। फर्स्ट बुक इज रियल एनालिसिस तुमको प्रिपेरेसन माने पढ़ा हम सेकेंड सेमिस्टर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन भी सेकेंड सेमिस्टर ये दीटा एग्जाम तुम कंडक्ट कर सेकेंड सेमिस्टर तुम ये दीटा एग्जाम कंडक्ट कर सारापर एग्जाम सरला तुम कौटी आसो थर्ड सेमिस्टर को आसो जोटा कि सेकेंड इयर स्टार्ट हो। सेकेंड इयर जो थर्ड सेमिस्टर तुम दब से मैथ तुम रही चैप्टर रही थियोरी ऑफ रियल फंक्शंस। ये गोटे बुक तुम पढ़ो। ये बुक रे जो थियोरी ऑफ रियल फंक्शंस अच्छे यहाँ गोटे बुक तार तुम प्रिपेरेसन कर तार थियोरी तार यूनिट आदि कौन पढ़ो तुम सिलेबस भी मेंशन अच्छे। ओके, तो नेक्स्ट आम आसवा मैथ 6। तो 6 रे आमर कौन पढ़ो ग्रुप थियोरी 1। ओके, ग्रुप थियोरी 1 पार्ट ग्रुप थियोरी गोटे बही अच्छे जार पार्ट 1 पार्ट रे तुम केते गुड़िए यूनिट मेंशन कर सिलेबस रे से यूनिट सब आम कवर करवा थर्ड सेमिस्टर रे। ओके, बुझे। तो नेक्स्ट कम टू थर्ड सेमिस्टर रे तुम आउ गोटे रही जाइए बुक गोटे है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सिस्टम्स ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो आमर ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये 3टा बुक तुमको रेफर करिया पड़ो थर्ड सेमिस्टर। फर्स्ट बुक इज थियोरी ऑफ रियल फंक्शंस, सेकेंड इज ग्रुप थियोरी, देन थर्ड इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, ये 3टा बुक को तुम प्रिपेरेसन करके थर्ड सेमिस्टर एग्जाम दब। ओके, थर्ड सेमिस्टर आ बाहर तुम आउ किसी एग्जाम माने क्वेश्चन आसबानी ये 3टा बुक भर ही तुम क्वेश्चन देवा पड़ो। बुझिपार तापर तुम देख पे जिते आम बीएससी को आसुचे +3 आम अंडर ग्रेजुएट करुचे आमर सब सेमिस्टर सिलेबस फिक्सड है भितर ही तुम क्वेश्चन आसो। ओके, तो फोर्थ सेमिस्टर से भाया कौन कौन बुक अच्छी फर्स्ट मैथ्स से आमर चैप्टर अच्छे न्यूमेरिकल मेथड्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड सेकेंड इज अच्छे टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक्सेस। ओके, एटा गोटे बुक न्यूमेरिकल मेथड्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग ये गोटे बुक टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक्सेस ये अनदर बुक। ओके, तापर तुम थर्ड बुक अच्छी रिंग थ्योरी ये जो 3टा बुक अच्छी। तो आ भितर तुम यूनिट दिखाई जोटा कि तुम सिलेबस मेंशन अच्छे ये यूनिट ये बुक रो कौन कौन पार्ट तुम कवर कर ए बुक रो कौन कौन पार्ट तुम कवर कर ए बुक रो कौन कौन पार्ट तुम कवर कर। ओके, सो देन कम टू फिफ्थ सेमिस्टर ऑफ मैथ C11 जोटा को आम कहे से मल्टी वेरिएबल कैलकुलस अच्छे। ओके, तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस वी कवर सम यूनिट अच्छी फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट ता भीतर कौन कौन आमर देजी सिलेबस ये सब आम कवर करवा। ओके, तो फिफ्थ सेमिस्टर 2टा बुक जोड़ा कवर करने अनदर देजी आमर मैथ 12 लिनियर अलजेब्रा गोटे बुक अच्छी तार केतेटा यूनिट देजी से सब आम फोर्थ सेमिस्टर कवर करवा। ओके, तो सिक्स सेमिस्टर आम से भाई किसी कवर करवा बुक आमको रेफर करने पड़ो। तो मैथ C13 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड ग्रुप थियोरी 2 देख ग्रुप थियोरी 1 देता आम थर्ड सेमिस्टर ये बाकी तक जहाँ आम रो ग्रुप थियोरी 2 रे आम कवर करवा। तो ये सिलेबस भितर माने डिटेल्स आम डिस्कसन कर मीनिंग है
तुमको फास्ट सेमिस्टर पिला माने मात्र 2टा बही किने को पड़ो जो 2टा बही को बेस्ट करके आमर जी यूनिट अच्छे 5टा 10टा यूनिट अच्छे आम कंप्लीट करवा एक कैलकुलस अंडर में आम 5टा यूनिट अच्छे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अंडर में 5टा यूनिट अच्छी ए सब यूनिट को गोटे पर गोटे आम कंप्लीट करवा से यूनिट भितर भी आम एक्सरसाइज अच्छी डिस्कसन करते सिलेबस विषय जहाँ कि आम बीएससी रो फर्स्ट ईयर सिलेबस विषय तो फर्स्ट ईयर सिलेबस आम फर्स्ट जोटा कि बुक रेफर करियो पड़ो कैलकुलस बुक रेफर करियो पड़ो कैलकुलस फर्स्ट यूनिट आज आम डिस्कसन करवा ओके तो नेक्स्ट स्टार्ट क्लास तो हाइपरबोलिक फंक्शन आम जो रोचे तो in your previous classes class 11 and class 12 we already discussed about many types of relations and functions so many types of relation and function no first जानते हो we know that algebraic function okay algebraic function okay तो algebraic function माने पिला माने कौन algebraic function माने आमर 2x थिबो बा x स्क्वायर प्लस 4 थिबो बा x क्यूब प्लस 5 बाय 3x ए टाइप रो थिबो ओके these all are called algebraic function because the use of variable by x variable गोटे टर्म यूज होबा द्वारा हम आपको कहूँ algebraic function से मोर हमर अछि logarithmic function हमें पढ़थिले logarithmic functions okay log x ऐसा no तो ये वाला हम logarithmic function थिला then हम पढ़थिले exponential function exponential function e to the power x थिला जोड़ा आम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े देन आम पढ़े इवन फंक्शन पढ़े और फंक्शन पढ़े इवन फंक्शन कौन पिला माने जोटा कि एफ माइनस एक्स टाइम सब एक्स एफ ऑफ एक्स आसला और फंक्शन कौन और फंक्शन कौन एफ ऑफ minus x टा पिला माने हमर आसे minus f of x okay these all are called functions function हम पूरे कंप्लीट करते हैं these functions क्लास 11 एंड क्लास 12 पे हमने ये सब को कंप्लीट करते हैं ओके तो जब तक कंप्लीट करते हैं हमने हायर मैथमेटिक्स चलो पढ़ने स्टार्ट कर ले बा क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टार्ट कर ले हम फर्स्ट चैप्टर रो फर्स्ट यूनिट अच्छे हाइपरबोलिक फंक्शन नो ओके तो हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़िया पूर्व we know that what is the meaning of e okay what is the meaning of e what is the meaning of e जोटा को हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यूज करूँ तो what is the meaning of e is Euler constant Euler's constant ओके आइलर से को स्टार्ट करते बाबा स्टार्ट करके ना दे सकते पे ना दे आइलर्स फंक्शन ओके तो ये यूजेस कौन हाइपरबोलिक फंक्शन ने हमें कौन कहें ये यूजेस करिबा बिकॉज बाय द यूज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e to the power x e to the power x is 1 plus x by 1 factorial plus x to the power 2 by 2 factorial plus x to the power 3 by 3 factorial plus up to आमर जो पर्यंत तार इनफिनिट पर्यंत तार जाइए ओके तो ये एक्स पावर आम जाने e पावर एक्स जिते थी आम भैल्यू कौन आसे 1 प्लस एक्स बै 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बै 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बै 3 फैक्टोरियल ओके जो इफ वी पुट in the place of x equal to minus x if we put x equal to minus x then we get e to the power minus x x रो प्लेस रे जते बड़े वो माइनस एक्स पुट करिवे ताने मते कोन मिलबो पिला माने e to the power minus x तो e to the power minus x रो कोन वैल्यू बाहरबो 1 minus x by 1 factorial
plus minus x square by 2 factorial plus minus x cube by 3 factorial up to infinity. Okay, what is the value of minus x? देखो ये आसला 1 आसला minus x by 1 factorial आसला plus x square by 2 factorial आसला plus minus x cube by 3 factorial आसला up to infinity. एटा थे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन. ओके अंडरस्टूड. एटा हमर कौन थला पिला माने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन. तो हाइपरबोलिक फंक्शन एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, we know that the meaning of trigonometric function in class 12 or class 11. Class 11 में जानते what is the meaning of trigonometric function. तो trigonometric function में पिला माने हमर कौन हुए, we use the variable sin x, cos x. All these are components of trigonometric function. 6 हमारा फंक्शन अच्छे 6टा फंक्शन अभी बिलोंग्स करे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कौन sin x टू हमारा cosec x पर्यंत. ओके तो sin x, cos x, cot x, sec x, cosec x and tan x, all these are all trigonometric function. तो trigonometric function आम जिते बेले करूँ तामे गोटे यूनिट सर्कल नो आमर ए पॉइंट वैल्यू मत किए कहीपर cos थीटा एंड sin थीटा. ओके दिस component is x and this component is y. This component is x and this component is y. What is the value of p? That is cos theta and sin theta. Okay, cos theta and sin theta. A x रो value ताले इट cos theta equal to x हुए and sin theta equal to y हो. बुझिए ना? This is called trigonometric function. But in this case, what is the meaning of hyperbolic function? This is our coordinate axis. Yes or no? This is x and this is x dash. This is y and this is our y dash axis. तो आमे जिते बड़े कोऑर्डिनेट एक्सिस से पैराबोला क्रिएट करिबा, पैराबोला रे चैनल हाइपरबोलिक फंक्शन. यस और नो? देखो पिला माने Used to out of them. That is good, man. It's a bit. एरिया हमर x1 टा कोन आसीबो cos थीटा, y1 टा कोन आसीबो sin थीटा. एरिया हमर x2 टा कोन आसीबो cos थीटा, y2 टा कोन आसीबो sin थीटा. बुझे ना? ए जो देखो ए जो पैराबोला दीटा हमर अछि आकु जो ए दीटा कोन हम कहबा एसिम्पटोट्स. Asymptotes. Okay, these two are called asymptotes. Okay, asymptotes को पे को जावे tangent जोड़ा को जावे कट करके जाउछ पैराबोला को. ओके बुझो छी ए पॉइंट हमरा कट करके जाउछ ता फंक्शन ता आर इक्वेशन ता कोन पिला माने x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1. But in this case we consider as we consider as a is 1 and b is 1. From here we get x square minus y square equal to 1. But we know that in trigonometric function a square plus y square equal to 1. But in hyperbolic function x square minus y square equal to 1. What are the difference? But in trigonometric function, but in trigonometric function x square plus y square equal to 1, but in hyperbolic function x square minus y square equal to 1.
From this class, we know that the basic concept of hyperbolic function and some examples of another function, and we know the graph of hyperbolic function. Next, first time we know that the basic idea about the hyperbolic function and all other functions. Okay, so now we start the for hyperbolic function रो basic idea हम already gain कर सारे एबे हमें कौन start करिए को जाऊँचे hyperbolic function to हमें केमिति लिखिबा and केमिति तार graph को understand करिबा. ओके, तो first हमें start करिबा hyperbolic function नो how to write hyperbolic functions. Okay, hyperbolic sine function is how to write hyperbolic sine function sine hx. This is h is our hyperbolic function. Okay, then write hyperbolic cosine function. Cos hx. Then I write hyperbolic tan function, that is tan hx. Then I write hyperbolic cot function, cot hx. What is the how to write hyperbolic sec function, that is sec hx. How to write hyperbolic cosec function, that is cosec hx. These all are the functions from sin x, cos hx, and tan hx, and cot hx, and sec hx, and cosec hx. Hyperbolic no quantities meaning हमें केमिति लिखिबा एंड केमिति रीड करबा हम ऑलरेडी जानि सरलानी. देन हमें जानिबा कोन hyperbolic sine function विषय. ओके, द ग्राफ ऑफ sin hyperbolic function एंड केमिति हमें तार फंक्शन टा क्रिएट करबा एंड रेंज एंड डोमेन विषय भी हमें जानबा. ओके, please underline the hyperbolic sine function. First, we know the graph of hyperbolic sine function. Okay. This is x and x dash. This is y and y dash. Okay. And okay, this is the graph of end by exponential function by 2 रो ग्राफ. ए ग्राफ टा मोर होचे एक्सपोनेंशियल फंक्शन रा ग्राफ. ए ग्राफ टा जो तळे जो ग्राफ टा दिया छै इटा नेगेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन रा ग्राफ. ओके, तो हाइपरबोलिक फंक्शन में जानछे तार बेस है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. विदाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन को नै कि हाइपरबोलिक फंक्शन रा किछि भी एक्जिस्टेंस नन. ओके, तो आमी जदि देखो, this is the graph of hyperbolic function. This is the graph of hyperbolic function. This is the graph of sine
this is the graph of sine hyperbolic function. Okay, केमिति ग्राफटा हम मुझे आपको प्रिंट कर देबी ताने ए जो ग्राफटा हमर आसीबो ए ग्राफटा को हम sin hyperbolic function नो ग्राफटा कहबा. Now we know the sin hyperbolic function domain in green. Sin hx is mapping from real number to real number. Domain is R and range is also R. Domain of sin hx equal to R and a range of sin hx equal to R. Our domain be real number set होगा and range be real number set होगा. Okay, बुझे तो sin hyperbolic function टा हमरा mapping करबो real number to real number. Then now we know how to write the sin hyperbolic functions. Okay, this is our e to the power x. What is the value of e to the power x? X by 1 factorial, x square by 2 factorial, and x cube by 3 factorial up to infinity. What is the value of e to the power minus x? 1 minus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial minus x cube by 3 factorial up to infinity. Okay, if I add two functions e to the power x minus of, if I subtract two function e to the power x minus e to the power x divided by 2, then I got the sin hx. Then I find the value of sin hx. Okay, from here we know that what is the value of sin hx? E to the power x minus e to the power minus x divided by 2. E to the power minus x divided by 2. Underline the sin hx. Sin hx equal to e to the power x minus e to the power minus x divided by 2. Understood? This hyperbolic function विषय तो hyperbolic function कौन है? sin hyperbolic function नो ग्राफ केमती क्रिएट हुए और तक हमें केमती लिखते हो. ओके, तो रेंज रोमन विषय ऑलरेडी हमें डिस्कशन करते हैं. तो आज हम स्टार्ट करेगा हाउ टू राइट cos hyperbolic function. ओके, we know that this is our x-axis and this is our x-dash axis, y and y-dash axis. So this is okay. This is the graph of e to the power x by 2. Okay. This is the graph of e to the power minus x by 2. Understand? This is the graph of e to the power minus x by 2. जैसे वो hyperbole हमें previous class में जाने थे वही क्या हो exponential function we can create as a hyperbolic function. ताल exponential function नो graph हमें जाने तब क्या तो e to the power x by 2 नो graph ले बोले e to the power minus x by 2 नो graph ले बोले यदि मैं आपको clean कर दे भी. This is the graph of cos hyperbolic x. This is the graph of y equal to cos hyperbolic x. Okay, मुझे ना ताकि exponential function ना वो जो graph हो जिसे इतना हमें केमिकल hyperbolic function ना graph create कर पाएंगे. ताले देख hyperbolic function cos hx हमें range and domain एडी create करेगा भी. Hyperbolic function is mapping from R to 1 to infinity. Okay, R to 1 to infinity. The domain of cos hyperbolic function equal to R and range of cos hyperbolic function equal to 1 of close interval to infinity. Okay, how to write
cos hyperbolic function. Cos hyperbolic function equal to e to the power x plus e to the power minus x divided by 2. अब बुझेला ताहले हमें बुझी पाइले cos hyperbolic function नो ग्राफ केमती क्रिएट हैला and domain and range of cos hyperbolic function and how to write cos hyperbolic function in the form of exponential function. Understood? Then we define both tan hyperbolic function. Okay. Okay. Hyperbolic tan function. तो अब hyperbolic tan function लो first हमें define करेगा tan hx is mapping from Oh. r2 minus 1 to 1. Okay, r2 minus 1 to 1 upon interval. Okay, how to write tan hyperbolic function? Tan hyperbolic function, we know that sin hx hyperbolic function divided by cos hyperbolic function. That is the meaning of e to the power x minus e to the power minus x divided by 2 divided by e to the power x plus e to the power minus x divided by 2. From this we can write cancel the 2 and 2, then we find e to the power x minus e to the power minus x divided by e to the power x plus e to the power minus x. This is the how to जदि आम जानी पिला मैंने sin hyperbolic function and cos hyperbolic function मिनिमम वैल्यू ताहले आम आउ जस्टिक फंक्शन रहा आइडेंटिटी रहा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बा हाइपरबोलिक फंक्शन आम यही टर्म में यूज करके फाइंड कर पाइबा बुझे तार आमको जना था जेहेतु sin hyperbolic function वैल्यू cos hyperbolic function वैल्यू आम ऑलरेडी tan के इजी बाहर कर पाइले ताहा ये आम पाइले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan hyperbolic function e to the power x minus e to the power minus x divided by e to the power x plus e to the power minus x. From here we can find domain of tan hyperbolic x equal to real over and range of tan hyperbolic function equal to minus 1 open interval plus 1. बुझे ना ताले आम ये जानी पारे tan hyperbolic function no range and domain and how to write tan hyperbolic function. Now we discuss the graph of tan hyperbolic function. Okay, this is our coordinate accessible. देखो भैया मैंने tan hyperbolic function ग्राफ आमर कौन आसो ये फास्ट आम टी वेट कर पैरेलल टू x एक्सिस आसो एंड एपटे पैरेलल टू x एक्सिस आसो. ओके, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ tan hyperbolic function. Got hyperbolic function. Okay, then let's start our class. Got
hyperbolic function. Okay, caught hyperbolic function. How do we define the caught hyperbolic function? Caught hyperbolic function is mapping from r minus 0 to r minus 1 close interval. Okay. Caught hyperbolic function equal to cos hyperbolic function divided by sine hyperbolic function. Okay. What is the value of cos hyperbolic function? E to the power x plus e to the power minus x divided by 2 divided by e to the power x minus e to the power minus x divided by 2. We cancel the total. Then we get e to the power x plus e to the power minus x divided by e to the power x minus e to the power minus x. This is the value of caught hyperbolic function. Okay. Caught hyperbolic function equal to e to the power x plus e to the power minus x divided by e to the power x minus e to the power minus x. Okay. Bujhela? Now we find the domain and range of caught hyperbolic function. Okay. Domain of caught hyperbolic function equal to r minus 0 and range of caught hyperbolic function equal to r minus 1 to 1 close interval. Okay, बुझे ना? पहले हमने डोमेन एंड रेंज बात करते थे. Now we discuss the graph of caught hyperbolic function. A graph of Or trying to see you. caught hyperbolic function. So there are x-axis and x-dash axis, y and y-dash axis. Now we draw the caught hyperbolic function. Okay. Y equal to caught hyperbolic x. Okay. Then we draw correct. I'm जानले first caught hyperbolic function no range domain बिषय कौन caught hyperbolic no range by domain है r minus 0 0 टा include हबो नहीं range है r minus 1 to 1 जोड़ा के include हबो नहीं कारण 0 रे value बाहर वो caught hyperbolic function no minus 1 and 1 ताहले हमें तापरे कौन करिबे तापरे कौन discussion करले and caught hyperbolic function no value कितने बाहर वो e to the power x plus e to the power minus h divided by e to the power x minus e to the power minus h. Okay. Then we discuss the graph of caught hyperbolic function. Okay. Now we go to discuss the stack hyperbolic function. And indicating the pets is easily going to be. Okay.
saying hyperbolic function is mapping from R to 0, 1. Okay. R to 0, 1. Domain of saying hyperbolic function equal to R and B. Range of saying hyperbolic function equal to 0, 1. Here. 0, 1. Zero one ଭିତରେ ତାର ରେଞ୍ଜଟା ରହିବ ଏଣ୍ଡ ଡୋମେନଟା ରହିବ ରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଭିତରେ ଓକେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସେକ୍ ହାଇପରବୋଲିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ବାଇ କସ୍ ହାଇପରବୋଲିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ What is the value of cos hyperbolic function? E to the power x plus a to the power minus x divided by 2 by e to the power x plus e to the power minus x. बुझे ना cos hyperbolic function of value कौन आसला 2 by e to the power x plus e to the power minus x. What is the graph of sec hyperbolic x? Stop. This is our x axis, y axis. Sec hyperbolic function of graph टा पिया मैंने कितनी था वो देखो देखो पिला मैंने cosec hyperbolic function नाम टिके वन पर्यंत एटा कट करिवो देन हमरो parallel to x axis asino and parallel to x axis asino okay y equal sec hyperbolic x क्वेश्चन करबा हमर आवडे जोटा रही जाइतिले cosec hyperbolic x विषय डिस्कशन करबा आ किछि इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कशन करबा ओके cosec hyperbolic function फास्ट आम जाना cosec hyperbolic function ना पिला मैंने आमर कोट केतिकी रेंज बा डोमेन कोट मैपिंग करछे तार केते पर्यंत ओके तो फास्ट आम कोन जानिबा cosec hyperbolic function is mapping from r minus 0 to r minus 0 from here we know that what is the domain of cosec hyperbolic function domain of cosec hyperbolic function equal to r minus 0 and the range of cosec hyperbolic function equal to r minus 0 okay तो आम जानते cosec hyperbolic function ना domain केते and range केते then we define करिबा what is the value of cosec hyperbolic function okay cosec hyperbolic function equal to 1 by sin hyperbolic function what is the value of sin hyperbolic function 1 by e to the power x
minus a to the power minus x divided by 2 by e to the power x minus a to the power minus x. Okay. From here we find that cosec hyperbolic x equal to 2 by e to the power x minus e to the power minus x. Okay. से पर्यंत कहार भी किसी डाउट नथि भावुचे कारण आम फास्ट कौन कले फास्ट आम मैपिंग करछे कोसेक हाइपरबोलिक फंक्शन कोटो r - 0 रो r - 0 ओके तापर फाइंड द डोमेन फाइंड करले कोसेक हाइपरबोलिक फंक्शन नो देन वी फाइंड द रेंज ऑफ कोसेक हाइपरबोलिक फंक्शन देन वी डिफाइन द कोसेक हाइपरबोलिक फंक्शन नो वैल्यू ओके नाउ वी डिस्कस द ग्राफ ऑफ कोसेक हाइपरबोलिक फंक्शन ओके graph of Please, this is the graph of cosec hyperbolic function okay parallel habo y axis सहित जेमि लागियो x axis सहित हमरो जॉइंट हे गेला मने parallel हबो x y dash axis सहित जेमि लागियो हमरो x axis सहित जॉइंट हे गेला मने तो ओके बुझी होची तो cosec hyperbolic function नो फर्स्ट हमें डिस्कशन करले डोमेन एंड रेंज देन हमें डिफाइन करले cosec hyperbolic function देन वी डिस्कस द ग्राफ ऑफ cosec hyperbolic function ऑलरेडी आज क्लास से पिला माने हमरो जति के आइडेंटिटीज थिला माने फंक्शन रो हाइपरबोलिक फंक्शन आम डिफाइन कर सारे और तार डोमेन रेंज भी जानी सारे तो आम ए किसी इंपोर्टेंट पॉइंट आमर जहाँ अच्छे डिस्कसन करवा ओके देखो पे सिमिलर टू हाइपरबोलिक फंक्शन इज सिमिलर टू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन भाई कारण आमर हाइपरबोलिक फंक्शन ने जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ने जहाँ कंडीशन रोला से भाया हाइपरबोलिक फंक्शन भी सेम कंडीशन रोचे टिके खाली चेंज होती जोटा कि हाइपरबोलिक कन्स्टांट आमर ता भर इनसर्ट कर ओके तो फर्स्ट पॉइंट आमको देती कोसेक हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक फंक्शन एस एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स जार वैल्यू ई टू द पावर एक्स तुम आपको चाहिए भी प्रूफ करके देखिपर यहाँ को आम नेक्स्ट क्लास यार प्रूफ देखा कारण आम वी नो द वैल्यू ऑफ कोसेक हाइपरबोलिक फंक्शन एंड ऑल्सो नो द साइन हाइपरबोलिक फंक्शन नो वैल्यू आम जानी चाहिए ओके ताहले आम ऐड करवा एंड देखा तार वैल्यू ई टू द पावर एक्स हो देन नेक्स्ट पॉइंट आम कौन देखिए मैंने cos hyperbolic function minus sin hyperbolic function equal to e to the power minus x. How to prove that point 2? Point 2 को prove करिए पहले पिया मैंने हमें past know the first we know the value of cos hyperbolic function and then subtract the sin hyperbolic function. जेतरे sin hyperbolic function को हमें subtract करिबा we get the value e to the power minus x. जदि e to the power minus x आसिना ताहले हमें जानिबा this condition is completely true. Alright. The next third point is cos square hyperbolic x minus sin square hyperbolic x equal to 1. आम से trigonometric कौन थी sin square x minus cos square x minus sin square x plus cos square x equal to 1 थी बट ये हम कौन देखिए cos square hyperbolic function minus sin square hyperbolic function equal to 1. Then our fourth point है sec square hyperbolic function plus tan square hyperbolic function equal to 1. ये सब को गोटे गोटे नहीं कि हमें कौन कर प्रूव करियो
Then our देजी फिफ्थ पॉइंट है cot hyperbolic cos square hyperbolic function minus cosec square hyperbolic function equal to what? तार आमे देखिबा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवेंट फंक्शन. जदि इवेंट फंक्शन एंड ऑड फंक्शन तुम क्लास 11 में तुम कंप्लीटली क्लियर होइतिबो थ्योरी ताहले तुम एठी इजीली याको सॉल्व कर परिबो. काहे कारण इवेंट फंक्शन आई नो दैट if f of x equal to f of minus x equal to f of x, then it is called a even function. को जदि f of x जगह minus x पुट करके पुट वैल्यू पाइबे f x ताहले मैं ताको कौन कोई इवेंट फंक्शन कोई इवेंट फंक्शन को जदि f of minus x equal to मोर minus of f of x आसे ताहले we call it as a odd function or it as a odd function. Okay, बुझे ताले इवेंट फंक्शन एंड ऑड फंक्शन हम जानि पहिले ताले इठी हमर कोन दे छै हमर cos ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में cos x ता हमर ऑड इवेंट फंक्शन को जाय sin x ता हम ऑड फंक्शन को से बोला hyperbolic function is similarly sin hyperbolic minus x equal to minus of sin hyperbolic function hyperbolic x that is called odd function cos hyperbolic minus x equal to cos hyperbolic x that is called even function. बुझे तो सिमिलरिटी रखी से आम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है. तुम जब ट्रिगोनोमेट्रिक क्लास 11 में पूरा कम्प्लीटली थरो हो थ्योरी पूरा कम्प्लीटली क्लीयर थी ताहले तुम हाइपरबोलिक फंक्शन को बुझे तुम किसी भी असुविधा हम ना तुम इजिली सॉल्व कर पारे. तो हाइपरबोलिक फंक्शन किसी इंपोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कशन करते. ओके, सो से इंपोर्टेंट पॉइंट में आज से पॉइंट मान को लेकिन आम प्रूव करवा. ओके, तो स्टार्ट से चार्ज फास्ट प्रूव है ना फर्स्ट पॉइंट पिला मैंने हमको देइछि cos hyperbolic x plus sin hyperbolic x equal to v to the power x. Okay, we know that the formula of cos hyperbolic function equal to e to the power x plus e to the power minus x divided by 2, and formula of sin hyperbolic x equal to e to the power x minus e to the power minus x divided by 2. If I add sin hyperbolic function and cos hyperbolic function, then we get cos hyperbolic x plus sin hyperbolic x LHS. Okay, left hand side को नहीं कि हम जितना प्रूव करिवा, then we put the value of cos hyperbolic function e to the power x minus e to the power x divided by 2 plus e to the power x minus e to the power minus h divided by 2. Okay, e to the power x plus e to the power minus x plus e to the power x minus e to the power minus h cancel out, then 2 e to the power x divided by 2. What is the value? E to the power x. This is right hand side. Okay, LHS equal to RHS आम जिते बड़े हो गला प्रूव द फर्स्ट पॉइंट. ताले आमर फर्स्ट पॉइंट प्रूव कला sin hyperbolic x and cos hyperbolic x रो वैल्यू केते e to the power x. जिते बड़े तुम क्वेश्चन ने डायरेक्ट देथिबो कैन प्रूव द वैल्यू e to the power x. ओके, Sure. then I prove the second point. Cos hyperbolic x minus sin hyperbolic x equal to e to the power minus x. We know that the value of cos hyperbolic function and sin hyperbolic function direct put the value of hyperbolic functions LHS equal to cos hyperbolic x minus sin hyperbolic x equal to e to the power x plus e to the power minus x divided by 2 minus e to the power x minus e to the power minus x divided by 2. Okay,
e to the power x plus e to the power minus x minus e to the power x plus e to the power minus x divided by 2. We cancel out the value of e to the power x and e to the power x. Then we find e to the power minus x 2 e to the power minus x divided by 2. 2 to cancel out. Then what is the value of e to the power x minus e to the power x? That is RH is right hand side. LHS equal to RHS ହେଇଗଲା. We can prove the second point. Cos hyperbolic x minus sin hyperbolic x ର value କେତେ ପିଲାମାନେ ଆମର e to the power minus x. ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯେଉଁ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଥିବ କିଛି ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଦେଇଥିବ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ we can put the value of cos hyperbolic function minus sin hyperbolic function equal to e to the power minus x. Understood? Cos hyperbolic x square minus sin hyperbolic square sin square x equal to 1. अभी LHS cos hyperbolic square x minus sin hyperbolic square x equal to e to the power x plus e to the power minus x divided by 2 squared minus e to the power x minus e to the power minus x divided by 2 रो square. Okay. And see, E to the power x plus e to the power minus x रो square divided by 4 minus e to the power minus x minus e to the power minus x रो square divided by 4. Okay. E to the power x minus e to the power minus x रो square minus e to the power x minus e to the power minus x रो square. आमर ये गोटे फॉर्मूला अच्छे आम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करिया 4 e to the power x e to the power minus x divided by 4. 4 is cancel out. E to the power x e to the power minus x. What is the value of e to the power x and e to the power minus x? E to the power x minus x, that is e to the power 0. What is the value of e to the power 0? That is 1. That is RHS side, right hand side. तामे फर्स्ट कौन देते पिला बने फर्स्ट नहीं cos square hyperbolic x minus sin square hyperbolic x sin square hyperbolic x is equal to 1. तो वैल्यू आमर 1 आसिया दरकार थिला तामु जेते बेले देखि हमें डायरेक्ट हमें ट्रिगोनोमेट्री कौन जानथले ट्रिगोनोमेट्री जानथले sin square x plus cos square x equal to 1. तो एटी हमर कोन cos square hyperbolic cos hyperbolic रो स्क्वायर minus sin hyperbolic रो स्क्वायर equal to 1. आमे ए जगह रे 1 पुट कर पाए. ओके तब हम 4 बिट कौन दे पिला माने sec hyperbolic square x minus sorry plus tan hyperbolic x square equal to 1. Okay. आमको लेफ्ट हैंड साइड कौन नवा पड़िबो लेफ्ट हैंड साइड हमको नवा पड़िबो sec hyperbolic square x plus tan hyperbolic square x रो वैल्यू हमको बाहर करे पड़िबो. तो sec hyperbolic x स्क्वायर कितना हमको 1 by cos hyperbolic x square plus sin hyperbolic x square divided by cos hyperbolic x square. Okay. तले हम इंसेप्ट दे जिबा से हमर केते आसीबो cos hyperbolic square x
तो 1 प्लस आमर कौन आसो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स पे मैंने देख लो फास्ट आम जो थर्ड पॉइंट जो प्रूफ करते थर्ड पॉइंट आप कौन देता हाँ थर्ड पॉइंट आमको देता कॉस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 तो आम जो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर ये प्रूफ करवा ताहले आम कौन आसो कॉस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर ओके ये कौन आसो मोर कॉस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आम 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर ये कौन पुट करवा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos hyperbolic x square that is the value of 1 is LHS तो हम प्रूफ कर देले हमें फोर्थ पॉइंट भी हमारे इजीली केमते हमें प्रूफ करले हमको देजे sec hyperbolic x square plus tan hyperbolic x square equal to 1 हमें ऑलरेडी ताको प्रूफ कर देले ओके देन वी कम टू फिफ्थ पॉइंट तो फिफ्थ पॉइंट हमें केमते पिला माने ताको प्रूफ करबा फिफ्थ पॉइंट आमको देची cot hyperbolic x square minus cosec hyperbolic x square equal to 1 ओके फर्स्ट आम कौन पुट करेंगे LHS नवा LHS आमको कौन देची पिला माने cot hyperbolic x square minus cosec hyperbolic x square नवा ताले what is the value of cot hyperbolic x square cos hyperbolic square x square divided by sin hyperbolic x square minus 1 by sin hyperbolic x square एटा हम जते बड़े आमे ऐसे नहीं चिबा sin hyperbolic x square आमर कौन आसे प्रिय मने cos hyperbolic x square minus 1 आसिगो आमे पुणी थरे से फार्मूला को पुट करबा देखो प्रिय मने आमर कौन देचे cos hyperbolic x square minus sin hyperbolic x square equal to 1 देचे ताहले आमर कौन आसीबो cos hyperbolic x square minus 1 ता जते हम ऊपर साइड को आनिबा लेफ्ट हैंड साइड को आमर sin hyperbolic x square आसीबो ता हम डायरेक्ट वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ cos hyperbolic x square minus 1 that is sin hyperbolic x square divided by sin hyperbolic x square equal to 1 बुझेला ताले हमें हमर कौन को पर्यंत प्रूफ कर देले फिफ्थ पॉइंट पर्यंत हमें ऑलरेडी कंप्लीट कर देले तो सिक्स नंबर पॉइंट देजे हमर कौन देजे sin hyperbolic minus x equal to minus sin hyperbolic x okay this is also called the even function okay even function sorry this is called odd function because our minus टा आसी जाउछे सेटा को हमें कौन कहूँ ऑड फंक्शन कहूँ जदि माइनस टा ये आसी न था sin hyperbolic minus x equal to sin hyperbolic x आसता that is called even function okay तो हमें तार प्रूफ करबा फास्ट sin hyperbolic minus x equal to minus sin hyperbolic x we know that sin hyperbolic x equal to e to the power x minus e to the power minus x divided by 2 put x equal to minus x then we get sin hyperbolic minus x equal to if I put in place of x equal to minus x then we get e to the power minus x minus a to the power minus of minus x divided by 2 okay e to the power minus x minus e to the power x
प्लस हो माइनस का माइनस कैंसल आउट हो डिवाइडेड बाय 2 तो आमको यहाँ कि गोटे फर्माट देखो जेहेतु फर्माट देखुनी आमको फर्माट आने पड़ो माइनस ये कमन ही आसिले ये टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 हो जाए जितेबाला ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर एक्स बाय 2 होगा यहाँ आम कौन आसीगला माइनस ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स ओके LHS इक्वल टू RHS आमर होगा तो अब कौन पड़े आसे आम प्रूव होगा ओके तो फर्स्ट 6 नंबर बिट आम प्रूव कर दिस फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड द ऑड फंक्शन ओके देन कम टू 7 नंबर पॉइंट 7 नंबर पॉइंट पिला मैंने हमको कौन देछि cos hyperbolic x equal minus x equal to minus sorry cos hyperbolic x okay प्रूव आम करवा we know that cos hyperbolic x equal to e to the power x plus e to the power minus x divided by 2 okay put x equal to minus x then we get cos hyperbolic minus x equal to e to the power minus x plus e to the power minus x divided by 2 जेहेतु ये प्लस अच्छी प्लस चिन्ह अच्छे आम एपट सेपट कले अल्टरनेट कले आम किसी भी प्रोब्लेम हेनी जेहेतु प्लस साइन अच्छे आम ये कौन करवा e टू द पावर माइनस एक्स प्लस e टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 2 मुझे फास्ट e टू द पावर एक्स लिखी मोर किसी प्रोब्लेम हेनी e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 दिस इज आवर कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन अंडरस्टूड ताल आम जिते बड़े कॉस हाइपरबोलिक एक्स रे माइनस एक्स नौचे ताल आम कौन मिलूँ कॉस हाइपरबोलिक एक्स ही सो इट इज एंड ऑल्सो कॉल्ड इट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन इवन फंक्शन जो माइनसटा आम आसोनी से आम कौन कहवा इवन फंक्शन कहवा तो ओके तो 6 नंबर एंड 7 नंबर बिट भावी कार किसी डाउट न आम देन स्टार्ट करवा आमर 8 नंबर बिट आम पिला मैंने कौन दे 8 नंबर बिट दे साइन आम जाने त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स प्लस वाई वैल्यू आम बाहर करचे जोटा कि साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स ओके ये आम हाइपरबोलिक फंक्शन को यूज कर केवल हाइपरबोलिक कांस्टेंट गोटे आमर इनसर्ट होती ना आउ सब जहाँ भी आम सेम अच्छे सेम फर्मूला ही रही आम आप प्रूव कर देखा ओके तो 8 नंबर बिट आम स्टार्ट करवा साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस cos hyperbolic x sin hyperbolic y understood I mean changes sin x hyperbolic x and cos hyperbolic y रो फॉर्मूला में जानचे डायरेक्ट हम LHS RHS नहीं के आपको प्रूव करबो ओके sin hyperbolic x cos hyperbolic y plus cos hyperbolic x sin hyperbolic y okay put the value of hyperbolic x e to the power x minus e to the power minus x divided by 2 into e to the power y plus e to the power minus y divided by 2 plus e to the power x plus e to the power minus x divided by 2 and also e to the power y minus e to the power minus y divided by 2 तापर आम कौन करिया पिला माने ताको मल्टीप्लिकेशन करिवो ओके आम कौन आसबो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x e टू द पावर y प्लस e टू द पावर माइनस y डिवाइडेड बाय 4 एटी कौन आसबो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y डिवाइडेड बाय 4 ओके 4 आम जेता कॉमन नहीं जिमा
LCM थी जहाँ कौन है इसमें e to the power x e to the power y minus e to the power minus x e to the power y plus तभी minus तब हमारा इसको plus e to the power x e to the power minus y minus e to the power minus x e to the power minus y तब रेपट आस्टिव हमारा e to the power x e to the power y e to the power x e to the power y plus e to the power x minus e to the power x e to the power minus y plus e to the power minus x e to the power y minus e to the power minus x e to the power minus y divided by 4. Okay, divided by 4. तो जब मैंने जो 4 है ना पिना मैंने देखो अब आपको ऑपरेशन तो होता है x डॉट y ऐसे में x क्रॉस y ऐसे में x to the power minus e to the power minus x क्रॉस y ऐसे में plus e to the power x minus y ऐसे में minus e to the power minus x क्रॉस y ऐसे में plus e to the power x क्रॉस y ऐसे में तब हमारे इसको minus e to the power x minus y plus e to the power minus x क्रॉस y minus e to the power minus x common as in the x plus y divided by 4 आसे ओके तो हमारे जो x plus y अच्छी एट x plus y अच्छी एट हमारे minus x minus y अच्छी e to the power x minus y अच्छी एट हमारे cancel out है जो देखो पिला मने e to the power alternate अच्छी तो एट अभी हमारे cancel out है जो तापर हमारा out of the आपण हमें बाकी रहला बेला में e to the power x plus y e to the power x plus y minus of e to the power x plus y इपोले गुटे आंकर माइनस नेगेटिव साइन होना चाहिए माइनस सच माइनस नहीं दर्शन कईटा कोन से आसना से माइनस कमन जाए जाता कि ये आम भूल जेहेतु अच्छी आम ये कौन कर e to the power 2 e to the power x plus y minus e to the power minus x plus y divided by 2 आसिया 4 तब ये हमारे कौन करिया पिला मैंने ठीक ठीक तो जब वो कॉमन दे यार से तब रेट कौन से x plus y e to the power minus x plus y divided by 2 तो ये हमारा कहाँ फॉर्मूला এটা আছে আমার sin हाइड्रोबोलिक x plus y रो फॉर्मूला ताने NHS इक्वल टू RHS हमें प्रूव कर देना NHS इक्वल टू RHS ना तारा में भी 9 नंबर बिट को हमें प्रूव करिबा नाइन नंबर बिट हमको कौन दे पिला मैंने साइन हाइड्रोबोलिक x minus y इक्वल टू साइन हाइड्रोबोलिक x cos हाइड्रोबोलिक y माइनस cos हाइड्रोबोलिक x साइन हाइड्रोबोलिक y तो RHS हमें लेके प्रूव करवा RHS हमको कौन दे साइन आम डायरेक्ट फॉर्मूला पके e to the power x minus e to the power minus h divided by 2 into e to the power y plus e to the power minus y divided by 2 minus e to the power x plus e to the power minus n divided by 2 e to the power
y minus a to the power minus of y divided by 2. ओके तापर आम मल्टीप्लिकेशन जो कम डायरेक्ट आसो यहाँ डायरेक्ट सागे सागे करदे e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू e टू द पावर y माइनस e टू द पावर y प्लस e टू द पावर माइनस y तापर माइनस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू e टू द पावर y प्लस माइनस e टू द पावर माइनस y डिवाइडेड होल डिवाइडेड होल हाँ तब हमें आपको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y प्लस e टू द पावर x e टू द पावर माइनस y माइनस e टू द पावर माइनस x e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस x e टू द पावर माइनस y तब ये होल टोटल आसने e टू द पावर x e टू द पावर y माइनस e to the power x e to the power minus y plus e to the power minus x e to the power y plus minus e to the power minus x e to the power minus y हाँ divided by 4 जो कल e to the power x plus y plus e to the power x minus y minus e to the power minus x plus y minus e to the power minus of x plus y तब आम जो ओपन कर ब्रैकेट e टू द पावर x प्लस y प्लस e टू द पावर x माइनस y माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस y प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ x प्लस y बुझे डिवाइडेड बाय 4 आम कैंसल आउट कौन कौन हो पे देख यहाँ कैंसल आउट हो गला तापर माइनस x रहा x माइनस y प्लस e टू द पावर एटा माइनस अच्छे यहाँ भी कैंसल हो गला ताले बाकी हमारे कौन रहा बाकी हमार रहा 2 e टू द पावर x माइनस y 2 e टू द पावर x माइनस y माइनस e to the power minus x plus y यहाँ माइनस एक्स प्लस वाई अच्छी डिवाइडेड बाय 4 अच्छी तो आम कौन करवा 2 कमन आने e टू द पावर x माइनस y माइनस e टू द पावर माइनस x माइनस y डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 है आम ये कौन आसीगला पे e टू द पावर x माइनस y माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस y डिवाइडेड बाय 2 दैट इज आवर cos sin hyperbolic x माइनस 1 दिस इज LHS हाँ तो आज क्लास पे पे कौन कले 6, 7, 8, 9 को प्रूव कले एंड तार प्रूफ को आम केमी एक्सप्लेन कले आज क्लास आम जानले तो नेक्स्ट क्लास आम आउ भी डिस्कसन करवा तो आज क्लास आम रखा थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।